Welcome dear students in your physics class. I am your teacher Abhinav Tyagi. Students, we have understood in the previous class about momentum. हमने अपनी previous class में momentum के बारे में समझा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था when a massive object starts moving then it carries a momentum. Momentum is denoted by P and it has formula. Momentum is equals to mass into velocity. Momentum is a vector quantity and it has the same direction as the direction of velocity. The unit of momentum is kilogram meter per second. Now students, today's topic is law of conservation of momentum. Students, इस टॉपिक में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब दो ऑब्जेक्ट मोशन में हों और दोनों आपस में कोलाइड करें तो उनके मोमेंटम में क्या चेंजेस आएंगे. सो लेट अस स्टार्ट. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. इट मींस इफ देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स, अगर किसी दो ऑब्जेक्ट्स पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं करता है, then the sum of the momentum of the two objects, ऐसी कंडीशन में दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन. अगर किसी दो ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं करता है तो दोनों बॉडीज का बिफोर कॉलिजन मोमेंटम एंड द सम ऑफ द मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों कंजर्व रहते हैं. इसमें कोई चीज़ इंक्रीज नहीं होती, ना इसमें किसी का मोमेंटम डिक्रीज होता है. ओके, हियर वी हैव ट्राइड टू डेमोंस्ट्रेट टू ऑब्जेक्ट्स. वन इज ए ऑब्जेक्ट एंड सेकंड इज बी ऑब्जेक्ट. इसमें ए ऑब्जेक्ट है मास m एंड बी ऑब्जेक्ट है मास m b. सपोज ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी u एंड बी ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी u. And here, initial velocity of A object is greater than initial velocity of B. So it is the condition of before the collision. After some time, हम जानते हैं कि A की velocity ज़्यादा है तो A B से collide करता है, and during this collision, A exerts some force on B, that is Fa. So as according to Newton's third law acceleration, the body B exerts some force on body A, that is FBA. FAB, the force exerted by the body A on B, and FBA, the force exerted by body B on body A. This is not during the collision. During the collision, ये दोनों एक दूसरे पर force exert करते हैं. Force exert करने के बाद after some time, the A object has some final velocity VA and B object has some final velocity VB. It is the condition after the collision. Okay, so for object A, momentum before collision, that is mass into velocity and UA. Okay, momentum after the collision, mass into velocity. A object have mass m. We know that mass is a constant quantity, it will not change. So after the momentum, after the collision, the final momentum of body A will be MAVA. Okay, so changing momentum. It will be final momentum minus initial momentum, that is MAVA minus MAUA. ओके, यहाँ से आप MA कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास VA minus UA. If we try to calculate the rate of change of momentum, rate of
change of momentum, then it will be FAB. It means MA VA minus UA upon T. This is for body A. We can similarly calculate for body B, like here for body B. Initial momentum before collision. बॉडी बी का इनिशियल मोमेंटम कितना रहेगा, मास इनटू वेलोसिटी m इनटू v. दिस मींस mv u. देन मोमेंटम आफ्टर द collision, मास इनटू वेलोसिटी. मोमेंटम आफ्टर द collision, that will be mass into final velocity. Rate changing momentum में कितना चेंज आ रहा है, that will be final momentum minus initial momentum, mv vb minus mv ub. क्लियर? यहां से स्टूडेंट्स हम mv कॉमन ले सकते हैं. सो mv common here, Vb minus U. If we calculate the rate of change of momentum, that will be FBA. It will be MV VB minus UB. UB divided by T. So स्टूडेंट इस तरह हमने पहले बॉडी ए का इनिशियल मोमेंटम निकाला बिफोर द कॉलिजन MA UA. उसके बाद हमने मोमेंटम निकाला आफ्टर द कॉलिजन फॉर बॉडी MA VA. देन चेंज इन मोमेंटम, ए बॉडी का मोमेंटम कितना चेंज हुआ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम MA VA माइनस MA UA. देन हमने यहां से MA कॉमन लिया तो आपके पास आता है minus u. Then the rate of change of momentum, and the rate of change of momentum as according to Newton's second law, which is equals to force, then it will be ma va minus v upon t. Students, here FAB is the force exerted by body A on body B. ma mass of body A, va final velocity of body A, ua stands for initial velocity of body A, and t stands for time. We can similarly calculate for body B, initial momentum before the collision mv ub, momentum after the collision mv vb, changing momentum mv vb minus ub, and rate of changing momentum, that is fba mv into vb minus ub upon t. Now students, we know that force is a vector quantity. If we have two vectors, vector A of magnitude 5 and vector B of magnitude 5, but in opposite direction, so क्या मैं इनको लिख सकता हूँ A vector is equal to B vector? नहीं लिख सकता हूँ. The reason is दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट उनकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है. सो अगर हमें इन दोनों वेक्टर्स को इक्वल करना है तो हमें इनकी डायरेक्शन, एक वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज करना होगा. और अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ, माइनस बी वेक्टर मीन्स डायरेक्शन इज चेंज. सो नाउ बोथ वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड 5 and they are in the same direction. Now both vector quantities are. ये टॉपिक मैंने आपको क्यों बताया, वो इसलिए बताया बिकॉज नाउ वी हैव टू यूज न्यूटन्स थर्ड.
थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, every action has an equal and opposite reaction. Every action has an equal and opposite reaction. The magnitude of action and reaction are equal, but they are opposite in direction. As you can see here, FAB, it is a force exerted by body A on body B. And the second force is FBA, the force exerted by body B on body A. Both forces are equal in magnitude, but opposite in direction. तो जिस तरह हमने अभी दोनों वेक्टर्स को इक्वेट करने के लिए नेगेटिव साइन लगाया था, एक वेक्टर में माइनस साइन लगाया था, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई थी, उसी तरह हम यहाँ पर भी लिखेंगे FAB इज इक्वल्स टू FBA। नहीं, अभी मैं इसको इक्वेट नहीं कर सकता हूँ बिकॉज बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। बट इफ वी यूज नेगेटिव साइन हियर, देन the direction of FBA is changed like this. Okay, so आप देख सकते हैं both vectors are in same direction. So now we can write down FAB is equals to negative of FBA. And what is the FAB? FAB was the rate of change of momentum MA VA minus UA upon T. And FBA, MB, VB minus UB upon T. यहाँ से T से T कैंसिल आउट हो सकता है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, MA मल्टीप्लाई VA में करेंगे तो MA VA माइनस MA UA, ओके, माइनस MB VB, माइनस माइनस प्लस MB UB। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो इनिशियल वेलोसिटी है इसको आप एक साइड ले आएंगे और जो फाइनल वेलोसिटी वाले कंपोनेंट्स हैं वो आप दूसरी साइड ले आएंगे। तो हियर वी गेट MA, देखिए ऐसे यहाँ पे VB माइनस का है, इधर आकर प्लस का हो जाएगा, या आप ये UA पे इधर लेके आएंगे MA UA प्लस MB UB इज इक्वल्स टू MA VA प्लस MB V। अगर आप यहाँ से देखें स्टूडेंट्स, MA UA इज द मोमेंटम ऑफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी A बिफोर द कोलिजन, MB VB the momentum of body B before the collision. So it means this is the total momentum of two objects before the collision. Total momentum before collision. Okay, and it is MKBA, momentum of body A after the collision, MPVB, momentum of body B after the collision. So it means it is the sum of the momentum after the collision. Total momentum after the collision. और यही हमें स्टेटमेंट में भी दिया गया था कि if there is no external unbalanced force acting on two objects, अगर इन दो ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई external unbalanced force एक्ट नहीं करता है, उस कंडीशन में the sum of